the next question, which is question number 6. Okay, हम लोग ये question solve करेंगे. Now what is given? A rectangular beam 120 mm wide and 300 mm deep is simply supported over a span of 4 meter, full stop. What UDL the beam may carry if the bending stress is not to exceed 120 megapascal? Question mark. The width of the beam is 120 mm. मतलब यहाँ पे एक rectangular beam है having rectangular cross section, 120 mm wide and 300 mm deep. So I'll draw the cross section here. This is my question number 6. Here we have rectangular section 120 mm wide and 300 mm deep. mm deep. ठीक है, you can draw the section. Now ये rectangular section है, is supported over a span of 4 meter. Means ये rectangular section को आप use कर रहे हो as a beam. Okay, which kind of beam we don't know, but it is supported over a span of 4 meter. What UDL the beam may carry if the bending stress is not to exceed 120 megapascal? पहला ऐसा question है जिसमें bending stress दिया हुआ है. Okay, supported over a span of 4 meter means it is a simply supported beam. यानी इस रेक्टेंगल सेक्शन को आप टर्न करके एक सिंपली सपोर्टेड बीम के फॉर्म में रखोगे जिसका लेंथ है 4 मीटर. ओके, दिस इज ए, दिस इज बी एंड इट इज कैरिंग अ यूडीएल. इसके ऊपर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है. यूडीएल मींस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. द बीम में कैरी इफ द बेंडिंग स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 120 मेगापास्कल. यानी पहला ऐसा क्वेश्चन जिसमें सिग्मा भी आपको दिया हुआ है 120 मेगापास्कल मींस न्यूटन पर mm स्क्वायर. ओके, आपको बोला है विड्थ ऑफ द बीम इज 120 व्हिच वी हैव ऑलरेडी मार्क्ड. ठीक है, तो यहाँ पे आपको यूडीएल फाइंड करना है. इट मींस यू हैव टू कैलकुलेट हाउ मच यूडीएल इज देयर. ये हमारा क्वेश्चन है. ठीक है, तो अभी हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे. सी हियर आई विल राइट द सॉल्यूशन. क्योंकि आपको बीम पता है, you know this kind of beam, okay, with simply supported, fine. तो अभी हम लोग इसका पहले बेंडिंग मोमेंट लिखेंगे. आई राइट डाउन सिंस बेंडिंग मोमेंट फॉर गिवन बीम, since bending moment for given beam is given by m is equal to सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूडीएल. उसके लिए बेंडिंग मोमेंट है WL स्क्वायर बाय 8. ठीक है, अभी आप इधर देखोगे W आपको मालूम नहीं है, यही अननोन है. कैपिटल L इज 4. ओके, सो देयरफॉर M इज इक्वल टू W हमें मालूम करना है, कैपिटल L इज 4, सो इट इज 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8. देयरफॉर M इज इक्वल टू, it will be 16, okay, 4 for the 16 divided by 8, so that would be 2W. Okay, this answer is coming out to be 2W. Okay, and this would be in terms of, you can say that this would be, the unit would be in terms of, it is 2W kilonewton meter. ठीक है, now ये अभी W हमारा अननोन है. ओके, हम लोगों ने m को रखा है in the form of W. Now I will write down after this, since you can say that moment of inertia भी calculation में हमें useful है, that is why we are calculating it. Moment of inertia is given by that is I is equal to, आप directly लिख सकते हो BD cube by 12. okay, so therefore B in this problem is 120, D is 300 cube divided by 12. Therefore my answer of I in this problem, it comes out to be 27. It is 27 into 10 raised to 7
mm⁴, ये हमारा I का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज y? y इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। आप यहाँ पे एक न्यूट्रल एक्सिस बताओ, और ये न्यूट्रल एक्सिस का हाफ मींस डिस्टेंस इज d/2, दैट इज योर y। ये d/2 जो है इट इज इक्वल टू y। फाइन, सो d is 300, you can say therefore y is equal to d/2 which is 300 divided by 2, so therefore my y is 150 mm। ठीक है, अभी हम लोग यूज करेंगे फ्लेक्सुरल इक्वेशन का फॉर्मूला एंड we'll see if we can get w or not। okay, so after this I am going to write down, since since we know the flexural equation as, since we know the flexural equation as m upon I is equal to sigma b upon y, इसको आप हाईलाइट करो। therefore m मुझे मिला है in terms of w, this m is equal to 2w, so it is 2w। I का जो वैल्यू हमारे पास है it is 27 into 10 raised to 7, 27 into 10 raised to 7 is equal to sigma b, क्वेश्चन में दिया हुआ है सिग्मा बी इज 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 120 डिवाइडेड बाय y मिला है d/2 which we have just now found out, y is equal to 150 mm, so it is 150 mm। आप लेकिन सिर्फ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम लोगों ने जब m लिखा था m was in किलो न्यूटन मीटर, और आप सारे डायमेंशंस mm में रख रहे हो, so you have to multiply by 10 raised to 3 here, so it is 2 into 10 raised to 3 w kilonewton mm। is that okay? So it is kilonewton mm। okay, so I have to multiply by 10 raised to 3 here, तो ये हो जाता है kilonewton mm में। if I calculate the whole thing, मैं w को एक साइड पे रखता हूँ और बाकी सारे टर्म्स on the other side। if I calculate the whole thing, I'll get my answer as 108 into you can say that 10 raised to into 10 raised to minus 3 kilonewton per mm। ओके, और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं सो आई विल गेट दिस एज 108 किलोन्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये है इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा है, दैट आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ W। तो पहला ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हमसे W का वैल्यू पूछा था और W का आंसर हमें मिला है which is 108 kilonewton per mm। So with this we have solved the question। Now let us go on to the next question।